बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिस मार्वेलस इन्वेंशन। टेस्ट 4 बुक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनीफोल्ड क्रिएशंस लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस। अदर इन्वेंशंस आर द व्हील, एग्रीकल्चर, स्लाइड ब्रेड may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human, जो कि हमें इंसान बनाता है। compared to language all other inventions pale insignificant, since everything we have ever achieved depends on language and origin itself. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals and even our nature. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट, मंथ्स, ईयर्स और नॉन्स को अंडरलाइन कर लेंगे। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स, इनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब आ जाए ज़रा अपने क्वेश्चंस पे। रीडिंग पैसेज 3, you should spend about 20 minutes on question number 27 to 30 40। सबसे पहला क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। पैराग्राफ रीडिंग प्लस 3 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ्स ए टू एफ, और हम लोगों ने इन सबको सर्च करना है ए आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ ए बी सी डी ई एफ है, तो ये वाले जो आंसर्स हैं आपने इनके सामने लिखना है। इसको इनके सामने कभी भी नहीं लिखना, नहीं तो वो आपका जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको गलत कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ए पढ़ लिया है। ए से हमें क्या समझ आया कि ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनीफोल्ड क्रिएशन लैंग्वेज मस्ट टेक पार्ट ऑफ प्लेस, तो हमारा आंसर क्या है, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज। क्या उन्होंने ऐसी कोई बात की, द वे इन विच ऑफ यू साउंड्स, ये भी नहीं बात। वाई द साउंड यूज इन डिफरेंट लैंग्वेज आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी नहीं है। इनकम करेक्टरिस्टिक्स की बात ही नहीं हुई। इवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल। वाई लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल, क्यों है, तो हम लोग हमारा आंसर क्या है, वी आई हम इसके सामने लिख देंगे। अब आज इस पैराग्राफ बी पे, बट लैंग्वेज इज़ फॉरमोस्ट नॉट जस्ट बिकॉज इट केम फर्स्ट in its own right, it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of engineer's simplicity. This marvelous invention of composing out of 25 or 30 sounds and a variety of expressions, तो हम लोगों ने देखा है कि इसमें काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो हम लोग इसका आंसर क्या दे देंगे, आई वी। सी पे आ जाए। लैंग्वेज ऑफन सीम्स अ स्किलफुली ड्राफ्टी दैट वन कैन हार्डली इमेजिन इट एनीथिंग अनदर देन प्रेफर्ड हैंडीवर्क ऑफ अ मास्टर क्राफ्ट्समैन। How else? This instrument makes so much out of here, barely 3 dozen misleading morsels in themselves. These configurations of mouth, F, V, D, जो भी है, so on, amount to nothing more than a few absurd spits and splutters, random noises with no meaning. तो हमारा आंसर क्या होगा, with no meaning, C. The way in which a few sounds are organized to convey a huge range of meaning. आंसर क्या है हमारा, डबल आई। Next one, the most extraordinary thing about language is that one doesn't have to be genius to set its wheels in motion. The language machine was just about everybody pre-modern, हर बंदा, सब ट्रॉपिकल सवाना। इसका इन्होंने यूनिवर्सली बात किया, तो हमारा आंसर क्या है, द यूनिवर्सल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। आंसर क्या है, वी डबल आई। नेक्स्ट पेज पे आ जाए ज़रा, ई पे। Often it is only the segment of foreign languages with their many exotic and outlandish features that brings home the wonder of language. Foreign languages की बात हो रही है, ज़ुबानों की बात हो रही है। One of the surest stunts that some languages can pull off in an ability to build up words of breathtaking length। एक ही लफ्ज़ जो है वो हम लोग बोलते हैं लेकिन सांस नहीं लेते। And thus one word that with English takes whole sentence in the से, मतलब एक पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो हम लोग एक ही लफ्ज़ में बोल देते हैं। द तर्किश वर्ड ये जो भी है, टू टेक एग्जाम्पल मीन्स नथिंग लेस दैन यू आर वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन। तो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ज़रा, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज हाईलाइट देयर इम्प्रेसिवनेस। आंसर इसका ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पे है ज़रा, and if that sounds like some off-freak, then consider Sumerian, the language spoken on the banks of the Euphrates some
5,000 years ago by the people who invented writing and thus invention of history. आपको हमेशा यही बताया जाता है कि फर्स्ट लाइन्स और लास्ट लाइन्स में आंसर होता है, लेकिन अगर हम लोग समझे तो हमारी फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर होता है। अब हमने ये फर्स्ट 2-3 लाइन्स पढ़ लिए, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखें, सुमेरियन वर्ड लाइक मेरुतुमा व्हेन ही हैड मेड इट suitable for her might seem rather trim compared to the Turkish crocus above. What is so impressive about it? However, it is not lengthiness but rather than the reverse above. लेंथी नहीं है लेकिन ये ईजी है। आंसर क्या है? इवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल। मतलब ये ज़्यादा लेंथी बोलना ज़रूरी नहीं होता, एक वर्ड ही आपको सारा कुछ बता देता है। आंसर क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा इसके आंसर्स पे। 33 to 36 क्वेश्चन आंसर है, समरी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, समरी है, साथ में लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी दिए गए हैं। इसमें से सर्च करके आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज किधर है? यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। द व्हील इज़ वन मोशन दैट हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन किसके ऊपर है? ये है व्हील एग्रीकल्चर साइड बेड मे हैव ट्रांसफॉर्म आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस, आवर मटेरियल एग्जिस्ट इम्पैक्ट ऑन मटेरियल, मटेरियल क्या है? ई। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बट नो इम्पैक्ट हैज़ बीन एज डैश एज दैट ऑफ लैंग्वेज, एज दैट ऑफ लैंग्वेज, बट द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इज वट मेड अस ह्यूमन कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल इन्वेंशन पेल इन सिग्निफिकेंस, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो आंसर क्या है? फंडामेंटल। बाकी सारी जो इन्वेंशंस हैं वो पेल हैं। तो ज़रूरी क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ वेरी डैश yet composed of just a small number of sounds. लैंग्वेज इज़ वेरी डैश, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ वेरी डैश yet composed of small number of sounds. But language is known not just because it came first. In its own right, it is a tool of extraordinary sophistication. Yet it is based on idea of ingenious simplicity. This marvelous invention composing out of 25 or 30 words that infinite variety of expressions. Infinite variety of expressions. तो हमारा आंसर क्या है? तो 20 or 35 that infinite variety of expressions. तो हमारा आंसर क्या है? बी। कॉम्प्लेक्स है। Language appears to be dash to use. Language appears to be dash to use. इस्तेमाल करने में language क्या है? The most extraordinary thing about language, however, is that one doesn't have to be genius to set it with the language. Yet it is precisely this deceptive ease which makes language a victim of its own success. Since in everyday life its triumphs are usually taken off for granted. The wheel runs so smoothly that one rarely bothers to stop. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? F. Easy. क्वेश्चन नंबर 37 to 40. सबसे पहले ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी गई होती है। नो क्या होता है? जो स्टेटमेंट नहीं दी गई। नॉट गिवन क्या होता है? नॉट गिवन होता है जो स्टेटमेंट नहीं दी गई होती है। नो क्या होता है? जो स्टेटमेंट होती तो है लेकिन गलत लिख दी जाती है। पिग्स माइट हैव अचीव्ड देयर प्रेजेंट पोजीशन विदाउट लैंग्वेज। हैव अचीव्ड, यहाँ पे क्या? लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस अदर इन्वेंशन द व्हील may have transferred our millions, but the advent of language is what made us human, जो कि हमें इंसान बनाता है। पहली लाइन में ही इसका आंसर है, तो ये गलत है। ह्यूमन बींग्स माइट हैव अचीव देयर विदाउट लैंग्वेज, हम लोग अपनी पोजीशन ले ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है हमारा? फॉल्स। द पोर्ट ट्रोय ग्रामर डिड जस्टिस टू द नेचर ऑफ लैंग्वेज। पोर्ट ट्रोय ग्रामर की तरह, पोर्ट रॉयल ग्रामरियन, ये पोर्ट रॉयल ग्रामरियन। This was how in 1660 the renowned French grammarian distilled the essence of language, and no one since has celebrated more elaborately the manicured essence of language. Since even so, there is just one flaw in all these hymns of praise. The true homage language unique accomplishment conceals a simple critical. William did justice to the nature of language. तो क्या उसने justice किया nature of language के साथ? यस। यहाँ पे देखिए ज़रा,
having themselves no likeness to what is in our mind allow us to disclose its whole secret and to make known to choose can better. Next, the essence of language, and no one since has celebrated more lively the magnitude of its achievement. उसने इसको अचीव किया. Next page, a complex idea can be explained more clearly in a sentence than in a single word. A complex idea can be explained more clearly. ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई. तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है क्योंकि हम लोग पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ चुके हैं. The Sumerians were responsible for starting the recordings of events. The Sumerians were responsible. Sumerians किधर है? Sumerians were responsible. Yeah, a Sumerian word like Manituba might seem rather trim compared to the Turkish locus. What is so impressive about it? However, it is not. मतलब ये lengthy नहीं था लेकिन इसने अपनी words को convey कर दिया. The Sumerian were responsible for starting the recording of events. अब उन्होंने events को कैसे लिखा है? The word is made up of different slots, each corresponding to a particular portion of meaning. The sleek design allows single sounds to convey useful information, and in fact, a sound has been instilled. If you were to ask which bet in Sumerian word corresponds to the pronoun, it is the English translation. When he did it made so for her. मतलब उन्होंने ट्रांसलेशन की तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू है. ये था हमारा दिस मार्वेलस इन्वेंशन. आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. शुक्रिया.